Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Aziza Munir, and today we'll be discussing a very interesting topic of quantitative business analysis, and in fact somehow you can consider the kind of concluding approaches towards quantitative business analysis or concluding techniques towards the analysis of data. So that is considered to be very efficient, and sometimes when you're having multiple set of values, so ANOVA is a kind of test which is applied to discuss the cases where multiple sets of data are involved. So whenever we are conducting research, we are having multiple kinds of data series available to us. Or there might be a case that when we are dealing with multiple variables, each variable need to be checked with its relevance with the other variables or not. So in that case, usually we talk about ANOVA. So it's a comparatively interesting topic, comparatively more result-oriented, and it is focused towards, very much focused towards the researchers, by the researchers to analyze the data streams and to conclude with specified results. So today we'll be talking about what is ANOVA and why we need to go through with ANOVA, that is analysis of variance. Basically, ANOVA is an abbreviation of analysis of variance. So why we need to conduct ANOVA, what is the purpose, and in which types of data we have to talk about, we have to refer with for the ANOVA tests. Then we'll be talking about that what is the relevance of ANOVA with mean and variance. If you're talking about ANOVA, that is analysis of variance, then why we need to undergo with means? So what is the purpose? So that is something which we'll be discussing today. What is the concept of F-test and F-distribution, and what is the application of F-distribution in ANOVA? That is another concept we'll be discussing today and in this lecture, and then we'll be having a glimpse of post-hoc concept with ANOVA and few applicative examples which explains you with the applicative approaches or the practicability of ANOVA, right? So let's start with the introduction, that what actually ANOVA stands for. So ANOVA is basically the comparison. Whenever we need to make comparison between two variable quantities, between two values, and we need to create certain kind of interpretations, and we need to undergo certain kind of procedures, in that case we have to apply ANOVA. Or ANOVA provides us with fine conclusions, with fine you can say the interpretations on the basis of which we can analyze that these sets of values or these data values are how much and in which intensity related with the other sets of data. So that is the purpose of conducting the test of ANOVA. So many studies have involved comparison between more than two groups of subjects. If the outcome is categorical, that is count of data, a chi-square for a larger then 2x2 table can be used to compare proportions between groups. If the outcome is numerical, ANOVA can be used to compare the means between groups. ANOVA is an abbreviation of full name of method analysis of variance, in which the blue streams, that is AN, O and VA, describes ANOVA, which is intended by R.A. Fisher in 1920s. So the concept was given by Fisher in 1920s, in which we need to talk about the comparisons of two data streams when chi-square is there and when there is categorical fit in the data. In that kind of data series, we used to apply ANOVA techniques. So why ANOVA instead of multiple t-tests? We have already discussed in detail that what is the t-distribution for a smaller sample size, and what is the normal distribution or z-distribution with standardized ratio analysis with the large data sets. And we have also taken into account the sampling and sampling distributions and the chi-square distribution as well. But we have not, if we are not being saturated with all these kinds of results, then
we are having a discrepancy in the data, which is in the data conclusions, in the data interpretations, which are fully covered by ANOVA. So what actually is the mainstream, what actually is the purpose of ANOVA? That is that when you are comparing means between more than two groups. Usually when we talk about T distribution and we talk about the standardized ratio of Z distribution, that is the normal distribution, in that case we talk about one data set or maximally two approaches or two sets of data, two streams of data. But when we are comparing means between more than two groups, why not just do several two sample tests to compare the mean from one group with the mean from each of the other groups? Before ANOVA, that was the only option available to compare means between more than two groups. ANOVA से पहले, ANOVA के कॉन्सेप्ट आने से पहले या उसके कॉन्सेप्ट आने के बाद भी जब उसकी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ नहीं हुई थी, तो भी हम यूजुअली अप्लाई करते थे टी टेस्ट को ट्वाइस और थ्राइस, कि एक सेट के ऊपर हमने टी टेस्ट अप्लाई किया, फिर एक और सेट हमने क्रिएट किया, उसके ऊपर टी टेस्ट अप्लाई किया, फिर एक और सेट क्रिएट किया, उसके ऊपर टी टेस्ट अप्लाई किया, और उन तीनों के जो हमारे पास रिजल्ट्स आए उनको हमने कंपेयर करके कंक्लूजन ड्रॉ की. लेकिन जब ANOVA का कॉन्सेप्ट आया है तो उस कॉन्सेप्ट में बेसिकली हमारे पास एक ऑप्शन अवेलेबल होता है जिसमें हम मीन्स को कंपेयर कर सकते हैं. एंड व्हेन वी कैन कंपेयर द मीन्स, वी डोंट नीड टू अंडरगो with multiple times with the t-tests. So usually when we are conducting the t-test, we receive one answer, one conclusion. But when we compare, once we run ANOVA, so in that case we compare multiple means with the given data streams. The problem with the multiple t-test approach is that as the number of groups increases, the number of two sample t-tests also increases. कि जब भी हमारे पास मल्टीपल टी टेस्ट हम रन करते हैं तो उसमें जो ग्रुप्स का साइज अगर इंक्रीज करता है, द नंबर ऑफ ग्रुप्स, मतलब ग्रुप्स की नंबर इंक्रीज करता है, हाउ मेनी ग्रुप्स वी आर अंडरटेकिंग इन द स्टडी, तो व्हेनेवर द नंबर ऑफ ग्रुप्स इंक्रीजेस, तो उस टाइम पर जो नंबर ऑफ टू सैंपल टी टेस्ट हैं वो भी इंक्रीज हो जाते हैं. तो वहाँ पर हम जब कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं और जब इंटरप्रिटेशंस करते हैं तो उस केस में, उस रेफरेंस में हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है. As the number of tests increases, the probability of making a type 1 error which also increases. तो जब भी हम probability की बात करते हैं, जब भी हम increase करते हैं probability को किसी एक टेस्ट के ऊपर, तो वहाँ पर हमारे पास type 1 error का चांस भी हो सकता है कि हम accept कर लें H0 को when it is not true. So that is something which is the problem which comes when we are talking about multiple t-tests. या हम जब t-test रन करते हैं तो उस केस में हमारे पास इस किस्म के प्रॉब्लम्स नजर आना शुरू हो जाते हैं, जो कि क्लेरिफाई हो सकते हैं, जो टेक्निक ठीक हो सकती है with the application of ANOVA. So ANOVA is single test for multiple comparison. So एक टेस्ट है ANOVA बेसिकली, और उसके एप्लीकेशन से हमें मल्टीपल कंपैरिजन्स पता लग जाते हैं. अगर हमने ये मल्टीपल कंपैरिजन्स टी टेस्ट में करने हो तो हमें हर कंपैरिजन के लिए एक नया टेस्ट कंडक्ट करना पड़ेगा, एक नई स्टडी को कंसिडर करना पड़ेगा और उसकी बेसिस के ऊपर कंक्लूजन्स ड्रॉ करने पड़ेंगे, विच इज़ कंपैरेटिवली लेंथी टास्क, विच इज़ यूजुअली टाइम कंज्यूमिंग टास्क. So the advantage of using ANOVA over multiple t-tests is that ANOVA will identify if any two of the group means are significantly different with a single test. तो यहाँ पर हमारे पास क्योंकि multiple means आ जाते हैं, उन multiple means को हम discuss करते हैं significant relationship के साथ या significant results के साथ, और वहाँ पर हम conclusions को draw करते हैं. If the significance level is set as 0.05, that is 95%, which is considered as a standard level of significance, the probability of type 1 error for ANOVA is 0.05, regardless the number of groups being compared. So in that case it remains the same. लेकिन अगर हम T test apply करते हैं तो उस केस में हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारे पास type 1 error type 1 error cause होने के chances होते हैं. लेकिन ANOVA के केस में we have reduces the chances of type 1 error, and here if the level of significance is 0.05, the probability of type 1 error for ANOVA is 0.05, is again very less, just regardless the number of groups which have been compared. But whenever we are increasing the number of groups in study for
t-test, multiple t-tests, in that case the chances of type 1 error will increase. So if the ANOVA F-test is significant, further comparisons can be done to determine which groups have significantly different means. तो अगर ANOVA F-test जो है वो हमारे पास significant relationship देता है, तो वहाँ पर हम further comparisons कर सकते हैं जो कि हमें बता सकता है significant difference in means. तो F-test की भी interference जो है वो हम discuss करते हैं ANOVA में along with the t-tests. ANOVA hypothesis. The null hypothesis for ANOVA is that the means for all groups are equal. So here we used to identify, or we used to create a hypothesis with means which shows that H0 is equivalent to mu1 is equals to mu2 is equals to mu3, so on up till mu k. जबकि हम t-test में, if you remember, हम दो means को compare करते हैं, that population mean is equals to sample mean, और mean of data 1 is equivalent to mean of data 2. लेकिन ANOVA के केस में हम multiple means के ऊपर बात करते हैं, multiple groups के means के ऊपर हम discussion करते हैं, which is mu1 is equals to mu2 and so on up till mu k. The alternative hypothesis for ANOVA is that at least two of the means are not equal. तो यहाँ पर जो हमारा H0 है, जो null hypothesis है, वो describe कर रहा है कि mu1 is equivalent to mu2 and which is equivalent to mu3 so on up till mu k. और जो alternative है उसमें हमने इसका जो reversal show करना है, उसमें हम सिर्फ हम at least two means के ऊपर अपनी study को condense करेंगे कि at least two means at least two of the means are not equal, meaning mu1 is not equals to mu2 and mu2 is not equal to mu3, rest till mu k might be equivalent. So alternative hypothesis to H0 will be that at least two of the means are not equal. So in that case, this alternative hypothesis concept is comparatively a new one, which we have not discussed in before. जब हमने sampling distribution भी पढ़ा, हमने hypothesis testing के ऊपर भी बात की, या हमने standardized ratio के ऊपर भी बात की, वहाँ पर भी हमने जो reversal है उसको alternative hypothesis में place in कर लिया. Meaning कि हमने अगर H0 में mu1 is equals to mu2 किया, तो alternative में mu1 is not equivalent to mu2 किया, और one tailed और two tailed के केस में हमने less than mu1 is less than mu2 और mu1 is greater than mu2 का केस डिस्कस किया. लेकिन ANOVA में हम greater than और less than की बात नहीं कर रहे. यहाँ पर हम सिर्फ कंसिडर कर रहे हैं H0 which shows an equivalent means of all distributions, and an alternative hypothesis we used to discuss कि at least two means are not equal. So the test statistic for ANOVA is the ANOVA F-statistic. तो जो टेस्ट स्टैटिस्टिक हम इसमें रन करेंगे ANOVA के केस में, जो हमने t-test में एक स्पेसिफाइड फार्मूला के थ्रू रन किया था, x बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा अंडर रूट n, और z के केस में भी हमने स्टैंडर्ड रेशियो के थ्रू डिस्कस किया था. सिमिलरली हम ANOVA के केस में F-statistic यूज करेंगे for the test statistic in hypothesis testing. Analysis of variance. Now, ANOVA is used to compare means between three or more groups, so why it is called analysis of variance? So, अगर हम means को discuss करते हैं, अगर हम means को compare करते हैं, तो फिर हम इसे analysis of variance क्यों कहते हैं? This is a point to be noted. अगर हम means की discussion करते हैं, अगर हम means के ऊपर बात करते हैं, तो हम इसे analysis of variance क्यों कहते हैं? This is a very interesting area with very important point, जिसके ऊपर usually एक डिबेट होती है कि एनालिसिस ऑफ वेरिएंस हम इसको कहते हैं, लेकिन हम डिस्कशन मीन के ऊपर करते हैं, और हम जिस एरिया को अंडर स्टडी करते हैं दैट इज मीन. तो बेसिकली जो वेरिएंस है वो हमें वेरिएबिलिटी बताता है, दैट व्हाट इज द डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी और डिग्री ऑफ वेरिएशन व्हिच एग्जिस्ट बिटवीन द गिवन वैल्यू टुवर्ड्स इट्स मीन, कि जो भी वैल्यू है उसका मीन से डिफरेंस कितना है, उसको हम स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास वेरिएंस आ जाता है. लेकिन यहाँ पर उस केस में भी हमारे पास मीन का मौजूद होना जरूरी है. लेकिन जो ANOVA F टेस्ट है वो बेसिकली कंपेयर करता है एवरेज वेरिएबिलिटी बिटवीन ग्रुप्स टू द एवरेज वेरिएबिलिटी विद इन ग्रुप्स. तो हम F टेस्ट के अंदर जिस चीज को कंपेयर करते हैं, जिस चीज की वेरिएबिलिटी को कंसिडर करते हैं, दैट इज द एवरेज वेरिएबिलिटी बिटवीन ग्रुप्स
मतलब आपस में जो जितने भी ग्रुप्स अंडर स्टडी है, मोर देन 3 अगर हमने कहा है कि 3 ग्रुप्स या 3 से ज़्यादा ग्रुप्स के अंदर के मीन्स को हम डिस्कस करते हैं, के मीन्स को हम स्टडी करते हैं, तो इन मोर देन 3 ग्रुप्स के दरमियान में जितनी भी वेरिएशन है हम उसको भी स्टडी करते हैं, प्लस विद इन द ग्रुप जितनी वेरिएशन है उसको भी हम स्टडी करते हैं एफ स्टैटिस्टिक में, विच इज़ द कैलकुलेटिंग पैरामीटर फॉर अनोवा। तो एफ टेस्ट जो है वो जो हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिक है एनोवा का, उसमें हम 2 किस्म की वेरिएशंस को डिस्कस करते हैं। एक हम वेरिएशन डिस्कस करते हैं बिटवीन ग्रुप्स ऑफ स्टडी, जितने भी ग्रुप्स हम अंडर स्टडी कर रहे हैं, अंडर कंसिडर कर रहे हैं अंडर स्टडी, उनके अंदर कितनी वेरिएशन है आपस में, और विद इन दी ग्रुप मतलब उस एक सिंगल ग्रुप के अंदर जितनी ऑब्जर्वेशंस है उन ऑब्जर्वेशंस में कितनी वेरिएशन है उसको भी हम स्टडी करते हैं। सो दैट इज अ कंपैरिजन बिटवीन एवरेजेस। And secondly, the variability within each group is a measure of the spread of data within each group, whereas the variability between groups is a measure of spread of groups around groups means around the overall mean of all groups combined. तो जब हम F डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो हम एक ऐसी रेशो को डिस्कस करते हैं जिसमें हम एवरेज वेरिएबिलिटी बिटवीन ग्रुप्स को डिस्कस करते हैं विद दैट ऑफ एवरेज वेरिएबिलिटी विद इन ग्रुप्स के ऊपर बात करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो स्प्रेड है हमारा वैल्यूज का विद इन ईच ग्रुप, एक ग्रुप के अंदर वैल्यूज कितने स्प्रेड के साथ एग्जिस्ट करती हैं with reference to the variability between groups of a measure between which describes the spread of group means around overall mean of the group combined। कि एक हमारे पास जो combined mean आया है उस combined mean में कितने वेरिएशन है spread of values में, प्लस हम डिस्कस करते हैं कि एक गिवन सेट के अंदर वेरिएशन कितना है फ्रॉम मीन टुवर्ड्स द स्प्रेड ऑफ द गिवन वैल्यूज। तो ये दोनों चीजें हम डिस्कस करते हैं एफ डिस्ट्रीब्यूशन की रेशो के अंदर, इन विच वी टॉक अबाउट द एवरेज वेरिएबिलिटी बिटवीन ग्रुप्स डिवाइडेड बाय एवरेज वेरिएबिलिटी विद इन ग्रुप्स। सो दैट इज समथिंग विच इज अ पॉइंट टू बी कंसिडर्ड। So ANOVA F statistic is used to describe the test statistic basically, and if variability between groups is large relative to the variability within groups, the F statistic will be large. जो रेशो हमने अभी डिस्कस की है उसमें न्यूमरेटर में हमने डिस्कस किया है, हमने प्लेस किया है एवरेज वेरिएबिलिटी बिटवीन ग्रुप्स। जो मल्टीपल हमारे पास ग्रुप्स आएंगे उन मल्टीपल ग्रुप्स के अंदर जो वेरिएबिलिटी है उसकी रेशो हमने वेरिएबिलिटी विद इन ग्रुप से ली है, मतलब न्यूमरेटर इज कंपैरेटिवली अ बिगर नंबर। तो यहाँ पर अगर जो वेरिएबिलिटी ग्रुप्स के दरमियान में ज्यादा है तो हमारा एफ स्टैटिस्टिक ज्यादा बड़ा आएगा डेफिनेटली। जो न्यूमरेटर की वैल्यू अगर हमारे पास बड़ी आ रही होगी तो हमारा जो एफ स्टैटिस्टिक है उसकी वैल्यू भी बड़ी आएगी। इफ वेरिएबिलिटी बिटवीन ग्रुप्स इज सिमिलर और स्मॉलर then variability within groups, the F statistic will be small। अगर उन दोनों की वेरिएबिलिटी तकरीबन बराबर है, सिमिलर है, या उसकी वैल्यू स्मॉलर है, न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, तो उस केस में हमारे पास डेफिनेटली F की वैल्यू स्मॉलर आएंगी। So if the F statistic is large enough, the null hypothesis that all means are equal is rejected। A very important area to be considered here is that F statistic is large enough। अगर हमारे पास F स्टैटिस्टिक बहुत बड़ी वैल्यू शो कर रहा है तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा, इसलिए क्योंकि सारे के सारे मीन्स आर इक्वल। तो इन दैट केस वी विल बी रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस कि सारे मीन्स इक्वल नहीं है और इनके अंदर वेरिएशन है। तो दैट इज व्हाई वी आर एक्सेप्टिंग अल्टरनेटिव वन एंड कंसिडरिंग दैट एटलीस्ट 2 ऑफ द मीन्स आर नॉट इक्वल। सो इन दैट केस if the F statistic value is large enough, this shows that there exists variation between the groups of values। ये एक illustration हमारे पास आती है स्टैटिस्टिक की, अगर हम इसको ग्राफिकली या थोड़ा सा डायग्रामेटिकली एनालाइज करें तो यहाँ से हमें एक जनरल सा आइडिया हो जाता है कि अगर ग्रुप 1 का मीन जो है, ये हमारे पास ग्रुप 1 का मीन है। हमारे पास 3 ग्रुप्स इस वक्त स्टडी हुए हैं अकॉर्डिंग टू दिस इलस्ट्रेशन, और तीनों ग्रुप्स में डेफिनेटली डिफरेंट मीन्स एग्जिस्ट कर रहा है। ग्रुप 1 का मीन जो है वो इस एरो से शो हो रहा है, विच इज दिस लाइन। ग्रुप 2 का मीन is closer to the red line, which describes the overall combined mean, and group 3 mean is somehow you can say lesser than the average mean।
So we can say that if we are discussing three means, Group 1 mean is existing comparatively higher than the combined mean. Group 2 mean is somehow approaching towards the combined mean, and Group 3 mean is lesser than the combined mean, which is the overall mean. So ये जो red line हमें show हो रही है यहाँ पर, this shows the overall mean of the observations. यहाँ पर जो difference आ रहा है mean का from this red line, that is the difference or that is the variation within group. एक ग्रुप के अंदर इस अगर ये ग्रुप अंडर स्टडी है, ये अगर इफ यू कैन सी माय माय पॉइंटर, अगर ये वाला ग्रुप हम स्टडी कर रहे हैं तो देयर इट इज इन द सेंटर इट लाइज द मीन. यहाँ पर सेंटर के अंदर कहीं पर मीन एग्जिस्ट कर रहा है. इस मीन से जितनी भी वैल्यूज वेरिएट होती हैं, जितनी भी वैल्यूज डिफर होती हैं, हम बेसिकली उसकी वेरिएशन को डिस्कस करते हैं डिनोमिनेटर में एफ स्टैटिस्टिक के वेरिएशन विद इन द ग्रुप ऑफ वैल्यूज कहाँ एग्जिस्ट करता है, कितना है. सो दैट इज समथिंग विच इज दी विद इन द ग्रुप वेरिएशन. और जो बिटवीन ग्रुप वेरिएशन है मीन का, वो ये वेरिएशन है कि एक ग्रुप का मीन ये है, दूसरे का मीन ये है और तीसरे का मीन ये है. तो ये जो हमारे पास लाइन आई है, ये हमें वेरिएशन शो करती है बिटवीन मीन्स में. So that is something which is an important area need to be analyzed in F statistic. That in numerator we used to take the value which is a variation between means, and in denominator we consider the value of variation within the group towards the mean. So within group एक और ये अगर हमारे पास F statistics small है, यानी कि अगर हमारे पास न्यूमरेटर की वैल्यू और डिनोमिनेटर की वैल्यू में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो उस केस में इलस्ट्रेशन ऐसी होगी. अगर हमारी न्यूमरेटर की वैल्यू में और डिनोमिनेटर की वैल्यू में मेजर डिफरेंस है, यानी कि हमारी ग्रुप्स की मीन के ग्रुप्स जो ग्रुप वाइज मीन्स हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएशन एग्जिस्ट करता है विद रिस्पेक्ट टू देयर ओन वेरिएशन टुवर्ड्स देयर मीन विद इन द ग्रुप. सो उस केस में अगर आप यहाँ से एनालाइज करें तो ये जो रेड लाइन शो हो रही है, दिस इज कंपैरेटिवली लार्जर देन द प्रीवियस केस. यहाँ पर जो रेड लाइन के साथ मीन का डिफरेंस है, दिस इज कंपैरेटिवली स्मॉलर, और यहाँ पर रेड लाइन के साथ या ओवरऑल मीन के साथ जो डिफरेंस है हमारा, वो कंपैरेटिवली लार्जर है. इस केस में हमारे पास जो एफ स्टैटिस्टिक है वो लार्ज शो होगा और प्रीवियस केस में एफ स्टैटिस्टिक स्मॉल शो होगा. नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट उस वक्त होगा जब एफ स्टैटिस्टिक की वैल्यू लार्ज आएगी. Whenever the value of F statistics comes larger to us, this shows that the numerator value is larger and the denominator value is smaller, which shows a widespread variation between the groups of means. जितने भी मीन ग्रुप्स हमने स्टडी किए हैं उनके मीन्स में एक विविड डिफरेंस एग्जिस्ट करता है. इसका मतलब ये है कि ये मीन्स इक्वल नहीं है. अगर ये मीन्स इक्वल नहीं है तो हमारा नल हाइपोथेसिस ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा और हम अल्टरनेटिव को एक्सेप्ट कर लेंगे, जिसमें हमने ये अजम्पशन क्रिएट की है कि एटलीस्ट टू ऑफ द मीन्स आर नॉट इक्वल. So in that case we will be accepting H1 and rejecting H0, which is null hypothesis. The total variation in two parts is the difference of each observation from the overall mean can be divided into two parts. That is the difference between the observation and the group mean, and the difference between the group mean and the overall mean. ये चीज़ अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो डिफरेंस है हर ऑब्जर्वेशन का ओवरऑल मीन से, वो दो पार्ट्स में हमने डिस्कस किया, दो पार्ट्स में डिवाइड किया है. एक है डिफरेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन विद इट्स ग्रुप मीन, और दूसरा है डिफरेंस बिटवीन ग्रुप मीन एंड द ओवरऑल मीन. तो हमने वी हैव आइडेंटिफाइड बेसिकली 4 मीन्स इन 3 सेट्स ऑफ डेटा. अगर आप इस इलस्ट्रेशन को एक दफा से दोबारा देखें तो यहाँ पर हमारे पास 3 ग्रुप्स तो स्टडी हुए हैं, लेकिन हमारे पास 4 किस्म की मीन आए हैं. एक ग्रुप 1 का मीन है, एक ग्रुप 2 का मीन है, एक ग्रुप 3 का मीन है, दैट इज मीन विद इन द ग्रुप, और एक ओवरऑल मीन है विच डिस्क्राइब्स द वेरिएशन ऑफ मीन बिटवीन द ग्रुप्स. तो यहाँ से जब हम डिस्कस करते हैं डिफरेंस ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन फ्रॉम ओवरऑल मीन, सो वी एक्चुअली टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्वेशन एंड द ग्रुप मीन एट फर्स्ट, एंड सेकेंडली वी टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द ग्रुप मीन and the overall mean. So ANOVA makes use of this practitioned
partitioned variability. ANOVA used to help us once we are practicing the variation in groups, so we use the partitioned variability in terms of ANOVA. Now what is partitioned variability? ये concept जब भी हमने use किया है partitioned variability का, जिसमें हमने variable chances को या variable observation के when we have identified the variation of means from group as well as within the group, तो इसमें हमने partition कर दिया है variability को, कि variations को, means की variation को हमने partition कर दिया है. इसका मतलब ये है कि if you are considering for example, consider the very small data set, which is group 1 includes 12, 16 and 18, group 2 includes 10, 12 and 16, and group 3 includes 8, 9, 10, 11, 10 and 12. यहाँ पर से हम एक जो mean calculate करेंगे वो है mean for each group. यहाँ पर mean of each group should be 16, यहाँ पर should be 12 and यहाँ पर should be around 9.5. तो sorry 10.5. तो यहाँ पर एक हमारे पास mean for each group आ जाएगा. Subject 3 in group 1 as value 18. तो यहाँ पर जो हमारा इन तीनों का combined mean होगा, इन तीनों values का जो combined mean होगा, overall mean होगा, वो यहाँ पर हम discuss करेंगे. The difference between subject 3 and overall mean is 18 minus the given mean is equivalent to the overall mean minus the given observation. This can also be expressed as the difference between subject 3 and the mean for group 1 plus the difference between the mean for group 1 and the overall mean. So that is something which describes, अगर हम इस example को थोड़ा सा apply करें तो ये हमारे पास एक generalized form बन जाएगी कि किस तरह से हमने partitioned variable को variability को discuss करना है. This partition relationship is also very true for the squared differences. जब हम squared differences की बात करते हैं तो भी हमारे पास ये relationship बहुत true exist करती है, true form में. So the variability between each observation and the overall or the grand mean is measured by a sum of squared total. जब हम variability की बात करते हैं हर observation की with its overall mean, कि हर वैल्यू अपने ओवरऑल मीन से कितनी ज़्यादा डिफर कर रही है, तो हम बात करते हैं सम ऑफ स्क्वायर्स टोटल की, which is SST. Then the variability within groups is measured by sum of squares within, that is SSW. जब हम within the given group अगर हम mean variation की बात करते हैं, means की difference की बात करते हैं, तो we talk about SSW, which is sum of squares within. And thirdly, when we talk about variability between groups, so we talk about sum of squares between, that is SSB. So SST is the total variation, which is determined through SSW, and SSB, which is sum of squares within and sum of squares between the groups. Mean square within and mean squares between का concept को थोड़ा सा हम एक नज़र और देख लेते हैं. The mean squares are measures of the average variability and are calculated from the sum of squares divided by the degrees of freedom. So mean square within is equivalent to sum of squares within divided by n minus j, where j is the number of groups which are under studied. अगर वो 3 है तो हम यहाँ पर j की वैल्यू 3 कंसिडर करेंगे, और n is the total number of observations. एक ग्रुप के अंदर या combine in groups कितनी number of observations को हमने study किया है वो हम यहाँ पर analyze करेंगे. So therefore n is the total number of observations and j is the number of groups which are studied in one's consideration. So MSB is mean square between, which is equivalent to sum of square between divided by j minus 1, which is in which j minus 1 is the degrees of freedom and j is the number of groups which we are considering. So जब हम mean square within लेंगे तो हमने n minus j करना है, number of observations minus number of groups जितने भी हम consider कर रहे हैं. जब हमने mean square between करना है तो हम j minus 1 से इसको divide करेंगे, which is the degrees of freedom, which is actually the number of groups minus 1. F-statistic can be run when we apply the ratio of mean square between with mean square within.
So F-statistic is a ratio of mean square between over mean square within. Now there exist few assumptions, few limitations you can say with ANOVA. One is that the observations are from a random sample and they are independent from each other. तो जितनी भी observations हम consider करेंगे वो सारी की सारी random samples से ली होंगी और वो सब की सब एक दूसरे से independent होंगी. Meaning one observation should not be related to the other observation, or if related they are not dependent. One observation should not be dependent from the other observation. So each observation is will be coming and giving the independent results. The observations are normally distributed within each group. So the number of observations which we are considering should be normally distributed within each group. इसमें हर ऑब्जर्वेशन जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी हर ग्रुप के अंदर, उसके अंदर वेरिएशन नहीं होगा. मीनिंग दैट ANOVA इज स्टिल अप्रोप्रिएट इफ दिस assumption is not met when the sample size in each group is at least 30. There might be a case कि हम एक ग्रुप के अंदर जो है वो वैल्यूज कंपैरेटिवली कम हो जाए. हो सकता है एक ग्रुप के अंदर 13 वैल्यूज हो, दूसरे में 12 हो और तीसरे में 10 हो. There might be a case. लेकिन अगर वो लेस देन 30 होती है तो भी हम इस ANOVA टेस्ट को रन कर सकते हैं. The variance are approximately equal between groups. That is, if the ratio of the largest SD over smallest SD is less than 2, this assumption is considered to be met. तो जो ratio है largest standard deviation की smallest standard deviation से, if it is less than 2, तो ये assumption हमारी met हो जाती है कि जो variance है वो तकरीबन सारे groups का बराबर होना चाहिए. It is not required to have equal sample size in all groups. लाज़मी नहीं है कि sample size जो है वो हर group के अंदर बराबर हो. जैसे मैंने आपको अभी बताया है कि ये भी हो सकता है कि एक ग्रुप के अंदर वैल्यूज कंपैरेटिवली ज़्यादा है और दूसरे के अंदर वैल्यूज कंपैरेटिवली कम है. स्टिल वी कैन कंपेयर द ग्रुप्स. यहाँ पर एक एग्जांपल है मोबिलिटी की, जिसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. The hypothetical data below represents mobility scores, that is highest score and indicates improved mobility for 3 groups of patients. The control group did not receive any therapy. जो control group में हमारे पास observations show हो रही हैं, ये वो group है जिसमें which have not undergone any therapy. But when it is undergone with treatment, so with first treatment it is showing treatment 1 results, and with the other treatment, physical therapy, we are coming up with another set of results which are mentioned in treatment 2. So the control group did not receive any therapy. Treatment group 1 received physical therapy and treatment 2 received counseling and physical therapy both. तो treatment 2 के ऊपर जो है वो physical therapy भी apply हुई है और counseling भी apply हुई है, और जो results आए वो हमने treatment 2 के column में show किए हैं. Whereas if the patients are just given with the physical therapy, all the results are mentioned in therapy 1 column, whereas if the patient has not been taken under any therapy and counseling session, these are mentioned in the controlled group. Now here we assume that the mobility scores are normally distributed. ANOVA जब हम रन करेंगे तो उसमें हम सबसे पहले टेस्ट स्टेट करेंगे हाइपोथेसिस को, जिसमें हमने अज्यूम किया है कि mean of control group is equivalent to mean of treatment 1 group, which is equivalent to mean of treatment 2 group. Alternative hypothesis will be that at least 2 of the means, that might be mean of control group, mean of treatment 1 group, or mean of treatment 2 group are not equal. ANOVA is always a two-sided test. ANOVA will identify if at least 2 means are significantly different, but will not identify which 2 or more means are different. So we will be setting the significance level at alpha, which is 0.05, which is a standard alpha for ANOVA. Then we calculate the SD for standard deviation for each group, which is in control it is 4.86, in treatment 1 it is 4.94, and in treatment 2 group it is 5.33. Now calculate the ratio that the largest SD over smallest SD is equals to, जिसमें से largest standard deviation है वो 5.3 है और जो smallest है वो control group की है, that is 4.86. इन दोनों की ratio हमारे पास 1.1 आई है, और ये ratio as the ratio is less than 2, which we have taken as an assumption of ANOVA,
तो as this assumption holds true, तो इसका मतलब ये है कि the ratio is less than 2, which assumes equality of variance between groups. यहाँ पर हम null hypothesis को accept करेंगे और alternative को reject कर देंगे. Overall mean is equals to average of all 18 observations, that is 41.7, and group means is equals to average of the observations in each group, that is control mean is 36, treatment 1 mean is 44, and treatment 2 mean is 45. यहाँ से जब हम SSW रन करेंगे, that is sum of squared within, और दूसरा हम sum of squared between रन करेंगे और उन दोनों का रेशो कैलकुलेट करेंगे. तो जो sum, the square of difference between each observation and its group means and the sum of the 18 terms, the SSW for the control group, whereas mean is 36. तो यहाँ पर हम 35 minus 36 का whole square plus 38 minus 36 का whole square plus हर observation का variation उसके mean के साथ लेंगे, which is SSW, और उसको square करेंगे तो हमारे पास 118 result आएगा. और जब हम sum of squared within लेंगे तो हमारे पास जो ग्रुप 1 का मीन आया that is 44, और वहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे SSW, that is within के केस में कितना, when we are talking about a kind of observation जिसके ऊपर हमने कोई थेरेपी या कोई काउंसलिंग सेशन अप्लाई नहीं किया, तो वहाँ पर जो मीन हमने कंसिडर किया है उसमें से हम हर वैल्यू को डिवाइड करेंगे, हर वैल्यू को डेविएट करेंगे और उसका स्क्वायर लेंगे, तो हमारे पास रिजल्ट SSW, that is sum of square within आएगा, और वहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे sum of square of within, which is 118 plus 112 plus 142, which is 382. तो हर ऑब्जर्वेशन को हमने इसी तरह से स्टडी किया कि जब हमने कंट्रोल को स्टडी किया, जब हमने कंट्रोल के ग्रुप को स्टडी किया तो हमारे पास 118 SSW आया है. जब हमने ट्रीटमेंट 1 को स्टडी किया तो 122 हमारे पास रिजल्ट आया है, और जब हमने ट्रीटमेंट 2 को स्टडी किया है तो हमारे पास 144 रिजल्ट आया है. इन तीनों का सम अगर हम कर लें तो 382 इज द सम ऑफ स्क्वायर विद इन. दिस वैल्यू 382 शोज सम ऑफ स्क्वायर विद इन. SSB जब हमने कैलकुलेट करना है, which is sum of square between, तो the overall mean जो है वो हमारे पास 41.7 आया है. overall mean हमने कैलकुलेट किया है इन तीनों के mean को divided by 3 करके, right? तो वहाँ से हमारे पास overall mean आया which is 41.7. The 3 group means are 36, 44 and 45. इन तीनों को अगर हम for 3 groups, for each group squares the difference between the group mean and the overall mean and multiply by group sample size. ग्रुप का जो sample size है हमारे पास वो है 6, क्योंकि 6 observations हमने स्टडी की हैं, तो उन 6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे हर ग्रुप के, मीनिंग 36 minus 41.7 होल स्क्वायर. 36 एक स्पेसिफिक ग्रुप का मीन है, उसको हमने माइनस किया है 41.7 विच इज द ग्रुप मीन, और उसको 6 से, उसके स्क्वायर को 6 से मल्टीप्लाई किया है. इसी तरह से ट्रीटमेंट 1 के मीन को हमने 41.7 के से विच इज़ द कंबाइंड मीन, उससे हमने माइनस किया है और उसको स्क्वायर को 6 से मल्टीप्लाई किया है, और इसी तरह से ट्रीटमेंट 2 के फिगर को ऑब्टेन किया है विच कम्स 292. अब जो हमारे पास SSB आया है वो 292 है, और हमारे पास SSW 382 आया है. We will be taking a difference of SSB over SSW when we are talking about F-statistic. So the mean square between which is MSB is the average variability between groups, that is MSB which is SSB over J minus 1, that is J is the number of groups which are taken in consideration in study, that is 3. So SSB is 292 over 2, that is the degree of freedom, which is 146, whereas mean square within is the ratio of SSW over n minus j, which is 382 over 18 minus 3, which gives us 25.47. इन दोनों का अगर हम इन दोनों की जो रेशो आएगी हमारे पास F statistic में, which is 146 over 25.47, which comes at 5.73. तो ये हमारे पास जो वैल्यू है वो 5.73 आई है.
यहाँ पर इस केस में जो f की वैल्यू है वो काफ़ी बड़ी है. So the null hypothesis of equal means between group is rejected if the f statistic is large enough. तो यहाँ पर जो f की वैल्यू है वो comparatively larger है, तो यहाँ पर इसलिए हम null hypothesis को reject करेंगे और alternate को accept करेंगे. The sampling distribution of the ANOVA F statistic is the F distribution, which is non-negative since all F statistics are positive. हमने हर एक को square लिया है, इसलिए कभी भी F statistic हमारे पास negative नहीं आएगा. That will be indexed by 2 degrees of freedom, that is numerator with degree of freedom j minus 1 and denominator with degree of freedom sample size minus the number of observations. The shape of the F distribution varies depending on the 2 degrees of freedom. इन दोनों degrees of freedom में जितना ज़्यादा variation आएगा उस तरह से जो shape of distribution है वो change होती जाएगी. और ये एक हमारे पास जो degree of freedom F distribution का जो table है उसके अंदर अगर हम values को obtain करें from 2 to 70 degrees of freedom तो हमारे पास values determine होंगी, which is determined through F distribution test, जो कि हमें Excel से भी मिल सकता है. The p value for ANOVA and F statistic, इन दोनों की जो relationship है p value की और ANOVA की, so the p value of the ANOVA F statistic is right tail area greater than F statistic. जो p value है ANOVA की वो right tail होगी which is greater than F statistic and F distribution with number of observation in numerator, degree of freedom and denominator, degree of freedom. So the F distribution, for example, of the given data is 5.73. The degree of freedom for the F distribution are 3.1, which is 2, and 18 minus 3, which is 15 for the denominator. We use F distribution function in Excel to find the p-value. F distribution or F statistic value for numerator degree of freedom and denominator degree of freedom will comes at F distribution 5.37 to 15, which is 0.014. आप किसी भी स्टैट्स की बुक में से ये टेबल आपको मिल जाएगा F डिस्ट्रीब्यूशन का, या आपको एक्सेल शीट के अंदर से भी F डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल मिल सकता है. अगर आप F डिस्ट्रीब्यूशन रन करें तो आपको ये वाले रिजल्ट्स मिल जाएंगे. अगर आप उसमें वैल्यू डालें F स्टैटिस्टिक की और न्यूमरेटर के डिग्री ऑफ फ्रीडम की और डिनोमिनेटर के डिग्री ऑफ फ्रीडम की, ये 3 वैल्यूज अगर आप उसमें डालें तो आपको F डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर जो वैल्यू एग्जिस्ट करती है, टेबुलेटेड वैल्यू जो एग्जिस्ट करती है, वो आपको मिल जाएगी. सो व्हाट विल बी द डिसीजन? ये जो वैल्यू हमारे पास आई है वो 0.014 है, विच इज लेस देन 0.05. So in that case, this lies under the given area. Since the p-value of 0.015 is less than the significance level of 0.05, the null hypothesis of equality between all group means is rejected. We can conclude that at least 2 of the means are significantly different. So how many of these means are significantly different? Which of the means are different? But this particular study is not giving the answer for that. अगर हम ये चीज़ मालूम कर लें, अब यहाँ तक तो हमें ये वाली चीज़ पता लग गई है कि p वैल्यू जो है वो छोटी है हमारी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से, तो देयर एग्जिस्ट इक्वालिटी बिटवीन ऑल द 3 ग्रुप्स ऑफ मीन. ये जो कंडीशन है हमने रिजेक्ट कर दी है. लेकिन कौन से कितनी ज़्यादा मीन्स से डिफरेंस है गिवन वैल्यू का, कौन से जो वैल्यूज़ हैं, कौन से मीन्स जो है वो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है, ये 2 आंसर्स हमें स्टडी से नहीं मिलते. इसके लिए हम जो स्टडी करते हैं वो स्टडी को हम पोस्ट हॉक स्टडी कहते हैं, और उसको हम एक थोड़ा सा अभी एक स्लाइड ग्लिम्स हम देंगे कि पोस्ट हॉक स्टडी क्या होती है, ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया हो कि हमें कौन सी वैल्यू को एक्सेप्ट के अंदर कितना वेरिएशन एग्जिस्ट कर रहा है. वो अगर हमें पता करना हो तो हम क्या करेंगे. We select ANOVA, which is a single factor test, which highlights all observations. ये जो Excel के अंदर हम ANOVA को रन करते हैं तो उसका it's a simple methodology. It's very simple method to run ANOVA in Excel sheet. We just select ANOVA as single factor, highlight all observations, जितनी observation उन सबको select कर लें. Indicate if groups are in columns or rows. अगर groups में अगर हमने groups को consider करना है तो Excel read करेगा कि जितने भी columns हम discuss कर रहे हैं वो groups हैं, और जितने भी rows हम discuss कर रहे हैं वो number of observations हैं. तो check the labels in first row if you highlighted labels को हम कोशिश करें कि उसमें highlight ना करें, ताकि आपके जो number of observations हैं वो उसमें exactly appear हो. otherwise अगर हम headings को भी count कर लेंगे तो वो Excel जो है वो उन headings को भी number of observations count करता है.
Select the alpha level for F, which is 0.05, it's standardized. Select output range and indicate a cell for the output table to be placed. Select OK. The ANOVA table and summary statistic will be placed in the indicated location. एक location आपको पता लग जाएगी जिसमें आपको ANOVA के results मिल जाएंगे और summary में आपको इस किस्म की values मिलेंगी जिसमें आपको SSB, SSW, SST ये भी मिल जाएगा और mean square within, mean square within और mean square between भी आपको इसमें mention हो जाएगा जिसको हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है. So I don't think so that it will be making any problem for you. Then comes the ANOVA table. जब भी आप एक्सेल की शीट खोलेंगे तो इसमें एक्सेल बायोस्टैट के अंदर आपको फाइल मिल जाएगी एनोवा टेबल की और वहाँ से अगर आप डेटा एनालिसिस डाल के टूल टू जनरेट करें, टूल्स में जाकर डेटा एनालिसिस डालें तो आपको एनोवा का टेबल भी मिल जाएगा. जस्ट हैव अ लुक एट द पोस्ट हॉक कंपैरिजन ऑफ एनोवा. So a significant ANOVA test is evident that not all means are equal, but it does not identify which means are significantly different. So जो ANOVA की study है वो हमें ये तो बताती है कि सारे means equal हैं, लेकिन वो ये identify नहीं करती कि कितने means significantly different हैं. So the method used to find groups difference after the ANOVA null hypothesis has been rejected are called post-hoc test. तो नल हाइपोथेसिस जब रिजेक्ट हो गया, जब हमने ये कंसिडर कर लिया कि एक वेरिएशन एग्जिस्ट करता है मींस के दरमियान में, लेकिन वो वेरिएशन कितना है और कितना सिग्निफिकेंट है वो हम एनोवा के अंदर शामिल नहीं करते, तो उसके लिए हम फिर रन करते हैं पोस्ट हॉक स्टडी. बट रिमेंबर दैट पोस्ट हॉक स्टडी विल बी कंसिडर्ड ओनली व्हेन नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड. So therefore post hoc is a Latin term which means after this. So post-hoc comparison should only be done when the ANOVA F test is significant. Adjustments for multiple comparisons में हम देखते हैं कि when multiple comparisons are being done, it is customary to adjust the significance level for each individual comparison so that the overall experiment significance level remains at 0.05. अगर हमने multiple comparisons करने हैं तो भी हमने जो alpha test है वो 0.05 के ऊपर ही run करना है. For an ANOVA within 3 groups, there are 3 combination of t tests. तो हमारे तीन combination मिलेंगे t test के जो कि equivalent results देंगे हमें p value के और उसकी basis के ऊपर हमने interpretations करनी होंगी. Post hoc comparison के अंदर the results of 2 sample t tests to compare mean mobility scores between the control group and treatment 1 groups will be like that control mean score हमारे पास 36 था, treatment 1 का score 44 था. जो p value इन दोनों sample tests में से आएगी वो 0.0179 है, वो जो कि हमने इन दोनों के रेसिप्रोकल को एनालाइज करके देखी है. 0.05 जो अल्फा था उसको 3 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 0.0179 आया, तो p वैल्यू हमारे पास ये आएगी which is not significant at the adjusted alpha level for 0.017 but would be considered marginally significant since it is closer to 0.017. For this we make a conclusion that after adjusting for multiple comparisons, the control group mean mobility score is marginally significantly less than the mean mobility score for the group that received physical therapy of जो जिसने physical therapy मिली है, meaning जो treatment 1 है उस group को ज़्यादा score मिल रहा होगा. बिल्कुल इसी तरह से हम treatment 2 के साथ compare करेंगे control mean को और वहाँ से हम analyze करेंगे कि कितनी p value आई है. इस रिजल्ट में हमारे पास 0.012 आई है जो कि conclude करती है कि after adjusting for multiple comparisons, the control group mean mobility score is significantly less than the mean mobility score for the group that received physical therapy और counseling. तो वहाँ पर p value हमारे पास 0.012 आई है, तो यहाँ पर भी एक significant difference है which comes at adjusted alpha level of 0.017. तो पोस्ट हॉक कंपैरिजन में अगर हम ट्रीटमेंट 1 और ट्रीटमेंट 2 को कंपेयर करें तो हमारे पास इन दोनों ट्रीटमेंट्स का कंबाइंड स्कोर डिस्कस हो सकता है, जिसमें हम कंक्लूजन ये निकालेंगे कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन मीन मोबिलिटी स्कोर बिटवीन द 2 ट्रीटमेंट्स एज द वैल्यू ऑफ p कम्स 0.743. तो इसका मतलब ये है कि 74% इन दोनों के अंदर सिमिलैरिटी है, तो इसमें कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है. लेकिन हम कंट्रोल ग्रुप के साथ स्कोर डिस्कस किया था, जब ऐसे ग्रुप के साथ डिस्कस किया था जिसमें हमने कोई ट्रीटमेंट और कोई फिजिकल थेरेपी नहीं दी, तो उस केस में हमारे पास देयर आर सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस. सो एनोवा वाज डन टू इवैल्यूएट. यहाँ से हम थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं अपनी पूरी की पूरी डिस्कशन को.
और देखते हैं कि अनोवा ने बेसिकली क्या डिफरेंसेस क्रिएट किए हैं। तो अनोवा वाज डन टू इवैल्यूएट डिफरेंसेस इन मीन मोबिलिटी स्कोर बिटवीन 3 ग्रुप्स, a control group, a control that received physical therapy, and the group which receives physical therapy plus counseling as well. The significant ANOVA F test result indicated that at least 2 of the mean mobility scores were significantly different, whereas the post-hoc T test with adjusted alpha level 0.017 were done, and the results of post-hoc comparison indicates that a significant difference between the control group and the treatment group with both physical therapy and counseling 0.012 exists. 0.012 और 0.019 के ग्रुप्स हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिसमें इन दोनों के केस में सिग्निफिकेंस डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, लेकिन जब हमने ट्रीटमेंट 1 और ट्रीटमेंट 2 के ग्रुप को डिस्कस किया तो उसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं करता। पी वैल्यू के केसेस में हमारे पास टू टेल टेस्ट होगा जो कि अज्यूम करेगा वेरिएशन फॉर ईच ग्रुप। सो ये एक कुछ मल्टीपल कंपैरिजन टेस्ट्स हैं जो कि हमारी इस पर्टिकुलर स्ट्रीम ऑफ स्टडी से बाहर है, लेकिन इन टेस्ट्स को अगर आप गूगल पे जाकर सर्च कर लें या किसी भी सर्चिंग टूल के अंदर जाकर एनालाइज कर लें, किसी भी स्टैट्स की बुक से देख लें, तो आपको ये वाले टेस्ट पता लगेंगे जो कि आपको कंपैरिजन टेस्ट बताते हैं। इसके अलावा भी कुछ अनोवा के प्रोसीजर्स हैं जिसमें हम एनकोवा भी डिस्कस करते हैं या 4-वे अनोवा टेस्ट भी रन करते हैं। एनकोवा के केस में हम कोवेरिएंसेस को एनालाइज करते हैं विच इज़ अ कंपैरेटिवली हायर स्टडी, लेकिन अगर हमारे पास 2 सिंपल वैल्यूज डिस्कस हुई हुई हैं, 2 सिंपल ग्रुप्स डिस्कस हुए हुए हैं, तो अनोवा इज द बेस्ट discussion which describes very fine conclusion in the given set of streams. So today's lecture was a combination of all the possible techniques which are covered in ANOVA, और हमने डिस्कस किया कि बेसिकली ANOVA जो है वो किस किस्म की सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस के ऊपर रन होता है और इसके अंदर कौन से assumptions जो है वो मेजर होते हैं। अनोवा को हमने टी टेस्ट के साथ भी कंपेयर करके देखा कि कौन सी लिमिटेशंस हैं जो टी टेस्ट में एग्जिस्ट करती हैं और अनोवा ने ओवरकम करता है। सो बेसिकली अनोवा हमें कंपेयर करके बताता है मीन्स को विद इन द ग्रुप एंड बिटवीन द ग्रुप्स, और वहाँ से हमें ये पता लगता है कि ओवरऑल वेरिएशन कितना एग्जिस्ट कर रहा है हमारी मीन वैल्यूज़ के अंदर। तो जितना ज़्यादा हमारे पास मीन वैल्यूज़ के अंदर वेरिएशन एग्जिस्ट करेगा उसका मतलब ये है कि हमारा एफ स्टैटिस्टिक जो है वो लार्जर आ रहा है। अगर एफ स्टैटिस्टिक हमारा लार्जर एग्जिस्ट करता है तो उसका मतलब ये है कि वैल्यूज़ के अंदर वेरिएशन एग्जिस्ट करता है, और हमने जो अजम्पशन क्रिएट की थी नल हाइपोथेसिस में कि हमारी मीन्स जो है हर ग्रुप के वो इक्विवेलेंट हैं, वो रिजेक्ट हो जाती हैं। तो 2 किस्म के हाइपोथेसिस ही हम इसमें सिर्फ क्रिएट करते हैं अनोवा में, जिसमें जो नल हाइपोथेसिस है वो अज्यूम करता है कि मीन ऑफ ऑल ग्रुप्स आर इक्वल, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस डिस्क्राइब करता है कि एटलीस्ट 2 ऑफ द मीन्स ऑफ द गिवन ग्रुप्स आर डिफरेंट और विच इज़ नॉट इक्वल। तो इन दैट केस अगर एफ स्टैटिस्टिक की वैल्यू हमारे पास बड़ी आती है तो उसका मतलब ये है कि देयर इज लार्ज डिफरेंस बिटवीन मीन्स, और अगर एफ की वैल्यू हमारे पास कम आती है तो उसका मतलब ये है कि हमारे पास वेरिएशन एग्जिस्ट नहीं करता ज़्यादा। दैट इज़ ऑल अबाउट अनोवा, और आज के लेक्चर में हमने बहुत डिटेल में एनालाइज किया कि अनोवा क्या होता है, किस किस्म की डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर वो अप्लाई होता है, किस किस्म की कंक्लूजन्स ड्रॉ की जा सकती हैं, एफ स्टैटिस्टिक क्या होता है, वेरिएबिलिटी के स्ट्रक्चर को अगर हमने फर्दर एनालाइज करना हो, फर्दर रीड करना हो, तो फिर हम उसको किस तरह से रीड आउट करते हैं, मीनिंग पोस्ट हॉक स्टडी जो है वो क्या रिजल्ट शो करती है, और पोस्ट हॉक स्टडी की इंटरप्रिटेशन विद रिस्पेक्ट टू पी वैल्यू क्या होती है। ये सारी की सारी चीज़ें हमने लमसम आज डिस्कस की हैं। आई होप कि अनोवा का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। For any more confusion and ambiguity, you can refer to the notes which will be provided to you shortly. Thank you so much for this time, and afterwards we will be talking about research orientation, and we'll be talking about the data collection techniques so that we can identify that how these quantitative approaches can be utilized on the collected data and which type of models can be created. So that is all for today's lecture, and we'll see you in the future lectures. Thank you so much for this time.